I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradle. Okay, fine. So look here, our next topic is what? Neuron. Neuron, I just already gave you demonstration little bit, isn't it? So neuron, it is the structural and functional unit of nervous system. तो मेन गुड़ी मतलब नर्वस सिस्टम का मेन अहम भूमिका कौन निभाता है? न्यूरॉन. नर्वस सिस्टम क्या है भाई? हम बोले टिश्यू क्या है? टिश्यू इज द कलेक्शन ऑफ सेल, एंड दिस कलेक्शन ऑफ टिश्यू गिव्स यू व्हाट? ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम गिव्स यू व्हाट? ऑर्गेनिज्म. दैट इज ऑर्गन, लेकिन ऑर्गेनिज्म बनता है. तो इसी तरह तो मेन व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? Yeah, this neuron, nerves, and that is why this is a cell. What is cell? Cell is the functional and basic structural unit of life. ये बोलते थे ना? तो वही है कि इस नर्वस सिस्टम का मेन भूमिका कौन निभाता है? वो है न्यूरॉन. नहीं आया समझ में? Yeah, this is why this is called the structural and functional unit of nervous system. ये है मेन आपका एक तुम्हारा नर्व सेल दे दिया ये. ठीक है, ये है पार्ट. देखो तो ये जो है ना, इसको बोलता है डेंड्राइट. ये पीने के खाने वाला डेंड्राइट नहीं है जो नशा होता है, वो वाला नहीं है. ठीक है सर, फैम्ब्री टाइप का होता है. नेक्स्ट है ये, और ये सेल का न्यूक्लियस है. ये सेल का न्यूक्लियस है, और ये तुम्हारा उसका इसको एक्सोन बोलते हैं, और ये है नर्व एंडिंग. इसका बहुत फंक्शन है. आपको 11-12 में बहुत और भी अच्छा से सीखेगा आप. पूरा इसका बेसिक पार्ट सीखेगा आप लोग. ठीक है. नाउ लेट अस come to the points of the function of neuron. What are the various function of neuron? Come on, let us discuss about the function. So look here, the first function, as you can see, look here, the first function is what? The information from the receptor acquired at the end of the dendrite tips of a nerve cell as a chemical receptor that create a electrical impulse. तो क्या होता है कि मेन हम लोग का जो देखो ये तुम्हारा नर्व सेल था. ऐसा करके हम रफ से बनाते हैं. देखो, और ये क्या बोलता है? डेंड्राइट. इसको क्या बोलता है? डेंड्राइट. So this receive what? Information. It is located at the tip of the receptor. It is located at the tip of the receptor. So it receives the signal or message, and it transfers through it. And there is one more nerves. Yeah, in the ending of this tails. Okay. And what happened? And this joining of two nerves is called what? Synapse. And there is a generation of transformation of the message from one nerve cell to the another nerve cell, because ultimately what? This joining of the nerve cell have to reach the information to the brain. So what happened? So how does it send the message? So there is an electrical impulse generator. झटका सृष्टि होता है. There is a creation of झटका, and this झटका is called the electrical impulse. I hope it is clear. Yeah. So what happened? This impulse travel from the dendrites to the cell body. तो ये इम्पल्स जो होता है, जो शॉक होता है, वो शॉक यहाँ से ट्रैवल होके ये पूरा अपना बॉडी ट्रैवल होता है. एक्सोन ट्रैवल होता है. इसके बाद क्या होता है कि केमिकल आर रिलीज एट द एंड ऑफ द एक्सोन बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स. मतलब ये जो एंड ऑफ द ये तेल जो होता है इसको क्या बोलता है? नर्व एंडिंग जो होता है तेल से उसका. तो इसमें क्या होता है कि इसमें फिर से केमिकल रिलीज होता है. ये केमिकल रिलीज से क्या होता है, फिर से यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला जो कंटिन्यू हो रहा है आपका, उसमें मेरा सिग्नल सेंड होता है. सिमिलरली ये भी खत्म होगा तो और एक ऐसा सेल में फिर से आपका साइनेप्स आएगा. ओके. सो फ्रॉम अनदर साइनेप्स इट अगेन सेंड अ मैसेज इन दिस वे. दिस इज द वे हाउ द मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम द वन नर्व सेल टू द अनदर नर्व सेल. वही बोला है. दिस केमिकल्स क्रॉसेस गैप्स. अभी जो केमिकल है वो केमिकल क्या करता है? गैप्स को क्रॉस करते हैं एंड स्टार्ट द केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनटू डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. समझ में आया कि नहीं? ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा वो और एक में कैसे ट्रांसफर होता है? हम लोग देखो दो वायर से कनेक्शन देते हैं कि ऐसे है, खोल के ऐसे करता है कि क्यों? ताकि वो जॉइनिंग इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं अगर लाइन क्लियर होगा तो सेम थिंग यहाँ से जो जन आता है, यहाँ से मैसेज क्या सिग्नल चेंज होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि केमिकल का रिलीज होता है कि नहीं? ये केमिकल फिर से इलेक्ट्रिक इम्पल्स वाज कन्वर्टेड इनटू
the chemical change, and chemical again it transfers to another cell, and this way the message is being transferred from one nerve cell to another nerve cell. Clear? And the similar synapse finally allow the delivery of such impulse from the neuron to other cells such as muscular cells or the gland. तो इसी तरह कि एक इम्पल्स मतलब एक इम्पल्स इसी तरह एक से और एक ब्रिज पार होके ultimately it reaches the final destination, that is our brain, and we recognize the signal what is all about. Clear this one? So यही बारे था. तो आप सीखिएगा ये चीज़ के बारे पे. हम आपको थोड़ा सा दिखा देता है और चीज़ को. तो ये चीज़ देखो आपका ये देखो ये चीज़ें मिला दो उसको. मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा. सो लुक हियर दिस इज द मसल फाइबर. नर्व्स कहाँ रहता है? और हम लोग मसल में तो रहता है. नर्व्स कहाँ रहता है? मसल में तो रहता है. तो देखो ये है तुम्हारा एक्सोन और ये तुम्हारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ये जंक्शन है. समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ से मैसेज जो रिसीव होता है तो वो वहाँ से भेज देता है. समझेगा? अभी what are the various parts of neuron? So neuron we have seen in the structure there is different types of parts of the neurons are there. The first is what? Dendrites. So dendrite का काम क्या है? ये main information को लूटता है. It just gather करता है. It just gather the information from the external environment, from the surrounding. कि क्या हो रहा है, ठंडा गर्मी, कोई पादरा हाँग रहा है, जो भी उसको साउंड सैंड उन मिलते हैं. क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट आपका सेल बॉडी. ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रैवल करने के लिए for the passage of the electrical impulse it helps. The cell body helps in the what? Passage of the electrical impulse through the way. Clear? ये पाइप जैसे काम करता है. पाइप जैसे जब पानी पाइप से बहता है कि नहीं, तो सेल बॉडी ये बहने के लिए काम आता है. नेक्स्ट थिंग इज दैट ये एक्सोन काम क्या है? ये एक्सोन इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सोन. it transmit the electrical impulse from cell body to the dendrites to the next neuron. क्योंकि एक न्यूरॉन खत्म होगा तो और एक न्यूरॉन पहुंचेगा कि नहीं. तो ये गैप को पूरा कौन करता है? एक्सोन पूरा करता है विद द हेल्प ऑफ साइनेप्सिस जो होता है उसमें. क्लियर हो गया? समझ में आया? साइनेप्स क्या है? साइनेप्स जो गैप जो है, क्या गैप है कि हेलो मैडम सुन लो, कि दो नर्व सेल का गैप को क्या बोलते हैं हम लोग? साइनेप्स बोलता है. वही बोला है कि इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन. समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल for the onward transmission. मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट केमिकल चेंज और केमिकल से फिर से इलेक्ट्रिकल ऐसा करके मतलब ट्रांसमिशन होता है. क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं बात जो? तो दिस आर द वेरियस पार्ट्स. हम नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन. क्लियर हो गया होगा? समझ में आया होगा आप लोग? थोड़ा है. हाँ हाँ लिखो. लिखा है. Type of cell called a neuron, also known as the nerve cell. The neurons connect to each other using a synapse, which is a structure that acts like a pathway connection that transmits signals to other cells to form the nervous system. Neurons have special structures that allow them to send signals rapidly and precisely to other cells by providing a common pathway for the passage of these electrochemical nerve impulses. Neurons are responsive in nature, by which we imply that the neurons respond to feelings and communicate the presence of that feeling to the central nervous system, which in turn is processed and sent like electricity, to the other parts of the body for action. The neurons are the basic constituents of the brain, vertebral spinal cord, the ventral nerve cord, and the peripheral ganglia, which is a mass of nerve cell bodies. Neurons can be categorized into three types: sensory neurons, motor neurons, and interneurons. Sensory neurons allow us to receive information from the outside world through our senses. The sensory neurons evoke the sensation of touch, pain, vision, hearing, and taste. These are usually present in the sensory organs like the eyes, inner ear, and so on, which send the signals to the spinal cord and the brain. Interneurons communicate and connect with each other and represent the majority of neurons in our brain. They allow us to think, see, and perceive our surroundings. Motor neurons are neurons that receive impulses. Plasm is called neuroplasm, and in the center, a spherical nucleus
with nucleolus is present. Nissel's granules are a number of small basophyllate granules of various shapes found in neuroplasm. Dendron are the branched projections of a neuron that act to conduct the electrical stimulation. Dendrites, these are terminal branches that arise from dendrons. Axon, it is single, long and cylindrical. Its primary function is to conduct the nerve impulses away from the cyton. The plasma membrane of neuron is called neurolemma. The axon is covered by medullary sheath Yeah, and class possesses 11 to nerve 11 of Ranvier. It may form a number of terminal arborizations. Let's understand how nerve impulse travels in the body. Yeah, interesting. Stimuli acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. At the end of the axon, the electrical impulse sets off the release of ये मेन पार्ट है, ये चीज कहना था. देखो, till this time what happened? The message was transferred in the form of what? Electric impulse. So as soon as the time what they reach at the midpoint of that, when there is a joint between them, so what happened? There is a chemical release, and this chemical is responsible for the transmission of the data or information to the next तुम्हारा interlink या फिर corresponding nerve cell. समझ में आ रहा है ना? वही बात बोलना था आपको. अब थोड़ा फील हुआ होगा, समझ लो. देखो. some chemicals. These chemicals cross the gap or synapse, And that gap is called what? Synaptic gap. Okay? and start a similar electrical impulse কি পাইছিলি? কি এটা? in a dendrite of the next neuron. This is a general scheme of how nervous impulses travel in the body. A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other nerve cells. नीचे हो गया. I have clear ना? बढ़िया. देखो